या टुडे आई एम गोइंग टू रीड द ऑर्गेनन में एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। प्रेजेंटली कल मैंने रेपर्टरी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ऑलमोस्ट रेपर्टरी हो चुका है, अब ऑर्गेनन का बाकी है। ऑर्गेनन में बहुत सारी चीज़ें, अभी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पढ़ना भी है, सिक्स्थ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पढ़ना है। फिर उसके बाद उसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। फिर देखते हैं आज क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। ओके, लेट्स स्टडी। काफ़ी मोटी बुक है यार ये, इसमें काफ़ी कुछ है। ऑप्शन गायनेक, सर्जरी एंड ऑल, मेडिसिन है। फिर AIPG 2019 2018 सॉल्व क्वेश्चंस। Portrait of the disease is formed by I'm going to solve around how many questions are there? Around 476 questions. So let's start. Portrait of the disease is formed by observation by physician, description of those around the patient, changes felt by the patient. All the word prima cause morbid means primary cause of the disease. 208 primary cause of the disease. Homeopathic physicians should not prescribe. Homeopathic physicians should not practice which one of the following: crush the vehicle calculus, open the imperforate anus, extraction of foreign substance from orifice of the body, prescribing opium for pain. Prescribing opium for pain. Okay. In antipathic disease are treated by a mixture of unknown drugs, nature herself, antagonistic remedy. Yes. Which one is not a synonym of antipathy? Palliative, enantiopathy, symptomatic, heteropathy. Heteropathy is different. Which is not a synonyms of antipathy, heteropathy. Material body without vital force is a dead. Material body without vital force is a dead. Is dead. Result. Result of action of one substances to another substances without any recognizable connection. Result of action of one substances to another substance without any recognizable connection between cause and effect is called dynamic influence. Law of causation, mechanical effect, dynamic influence. Morbid deranged vital force and totality of the symptoms are same. Medicine act upon vital force through nerve, blood, lymph node, breathe, and nerve. Antibody medicine initially causes disappearance of symptom, transient apparent amelioration, apparent amelioration, decided amelioration, manifestly aggravation, transient apparent amelioration. Fetid odor which offenses olfactory nerve can be removed by snuff, music, sugared cake, any of the above. Snuff. Which one is not true regarding morbific noxious agent? Acts conditionally, do not produce disease in every one of and all time, cause disease only when organism is sufficiently exposed to susceptible, superior to medical agent. Nature can cure stronger similar disease, weaker dissimilar disease. All nature can cure. Nature can cure weaker similar disease.
Okay. Which one is not true regarding complex disease? New disease after having long acted upon the organism joins the old disease. Real amalgamation of two disease occurs. Each occupies a particular locality in the organism, cannot cure one another. Okay. Cowpox by similarity of action can cure intermittent fever. Cowpox by similarity of action can cure intermittent fever, swelling testicles, whooping cough, amaurosis. 221. 221A. Intermittent fever. Which of the following antipathically give momentary relief of chronic weak and cold stomach? नीलेश, हेलो नीलेश, हाय सर। सर BUMS में स्कोप है क्या? BUMS में स्कोप नहीं है यार, BUMS से अच्छा BHMS कर लो नीलेश। इस वीडियो को लाइक करते रहिए। मेरा नाम डॉक्टर सलमान है, आई एम अ होम्योपैथिक डॉक्टर एंड करेंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर AIPGT एग्जाम, दैट इज़ PG इन होम्योपैथी। ओके, जो भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, ओके नीलेश, वीडियो को लाइक करो। दीपक, दीपांशु 15632 ऐसी कैटेगरी UP MBBS मना मैंने क्यों नहीं कर रहे हो आप? 153 रैंक ऐसी कैटेगरी उत्तर प्रदेश स्टेट कोटा में मिलेगा फर्स्ट राउंड में। प्राइवेट BMS वर्थ है, हाँ प्राइवेट BMS वर्थ है। रैंक कैटेगरी उत्तर प्रदेश स्टेट कोटा फर्स्ट राउंड में। आपका मार्क्स कितना था? दीपांशु, दीपांशु बायोलॉजी आपका मार्क्स कितना था वो बताइए। 456 SC कैटेगरी। फर्स्ट राउंड तो ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट ना। सेकेंड राउंड में आपको चांसेस है, चांसेस तो है आपको MBBS मिल जाएगा 456 में। यस यस, समझ गया, SC कैटेगरी ना, हाँ चांसेस है। कोई भी GMC मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, आप कर लीजिएगा क्योंकि मार्क्स आपका ठीक है, मार्क्स आपका अच्छा है, तो कहीं भी GMC मिल जाए आप कर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि आपको UP में ही मिले। ओके, बट मोस्टली आपको स्टेट वाइज में ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ हाँ, मैं समझ गया भाई, उत्तर प्रदेश का आप बता रहे हो। यस यस, अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है, सही है, फिर हो जाएगा, डोंट वरी दीपांशु। गाइस वीडियो को लाइक करते रहिए, कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। Which of the following is most characteristic in chronic disease? Accessory circumstances, mental symptom present, complaints, lesser accessory symptoms. Which of the following is most characteristics in chronic disease?
Description of hypochondriac patient is found in the aphorism 96. Description of the hypochondriac patient is found in the aphorism 96. Hypochondriac patient. Aphorism 96. Which one is a characteristics of epidemic disease? Attack many person, similar suffering, same cause. Okay. Attack many person, similar suffering, same cause. True natural chronic disease arise from chronic miasm, acute and chronic miasm, sura only, unhealthy mode of living, chronic miasm. Uh, Second edition of chronic disease was published by Dusseldorf. Dash is appeared on the occurrence of scurvy but appeared after scurvy is cured. Itch. Itch is a itch is disappeared on the occurrence of scurvy but appeared after scurvy is cured. Itch. Okay. Chronic disease related treated by long continued aggressive allopathic medicine can cause. Chronic diseases treated by long continued aggressive homeopathic drugs can cause. Artificial disease, diminished strength of the patient, suppress and suspend original disease. Okay. Asphyxia, suspended animation can occur by suffocation, lightning, drowning. Asphyxia and suspended animation can occur by suffocation, lightning, drowning. When two similar disease meet, the stronger annihilate the weaker because both have same origin, both involve the same part of the organism, both have same manifestation, all both involve in the same part of the organism. 233. B. Which of the following acts antipathically and gives momentary relief of typhus with paralytic torpor of body and mind? Valeriana, muriatic acid, baptisia, phosphoric acid. Which of the following act antipathically and gives momentary relief of typhus with paralytic torpor of body and mind? Valeriana. Which of the following may be called criminal treason against divine homeopathy? Browso's method, isopathy, allopathy, antipathy. 235. Allopathy. Criminal treasons against divine homeopathy. Allopathy. Okay. Condylometer disease is psychosis that everyone knows. Which disease generally becomes infectious, contagious when prevail among thickly concreted mass of human being? Epidemic. Hahnemann detail about lesser accessory symptoms of the chronic disease in 95. Lesser accessory symptoms of chronic disease in 95. Lesser accessory symptoms. Lesser CESSORY. Lesser accessory symptoms of chronic disease. Aphorism 95. स्टूडेंट्स को कौन सा होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करना चाहिए जिससे कंसंट्रेशन बढ़े और पढ़ाई में आलस जैसा ना लगे? अर्जेंटम नाइट्रिकम. राकेश रंजन, अर्जेंटम नाइट्रिकम. Hahnemann treated all chronic disease before discovering of his theory of chronic disease as disease of individual isopathic isolated. Okay. Physician should not interrupt किस पोटेंसी में और कैसे यूज़ करना. पोटेंसी 200 एंड डेली आप यूज़ कर सकते हो, बट हाँ कॉन्सेंट्रेशन की बात है तो जब तक कॉन्सेंट्रेशन आ ना जाए तब तक आप यूज़ कर सकते हो, राइट. मान लो एग्जाम के टाइम पे आपको कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए तो उस टाइम पे आप यूज़ कर सकते हो. ओके.
200 पोटेंसी। दिन में एक बार, जब भी आपको पढ़ने का मन हो, पढ़ने का टाइम हो, उस टाइम पे आप ले लीजिए और पूरा दिन पढ़िए आराम से। 3 ड्रॉप्स डायरेक्ट ऑन टंग, 3 ड्रॉप्स। Physician should not interrupt the patient when he details. Okay, like, thank you so much. Which one of the following observe the physician should not interrupt the patient when he details his symptoms, because interruption breaks train of thoughts, it makes patient angry. No. Interruption breaks train of thought. Which of the following observe the physician in patients during case taking? Which of the following observe the physician in patients during case taking? Behavior of patient, pulse, condition of abdomen. All of the above. Which of the following is true regarding hypochondriac patient? Describe symptoms in vague term. What is true? Have falsely modesty. Describe ailments in exaggerated form. Describe ailments in exaggerated form. Allopathic physician makes issues to suppress epilepsy. 243. Allopathic physician makes issues to suppress epilepsy. Which one is a false of chronic disease? Caused by chronic miasm. Finish its course in moderate time. No. Small, often imperceptible weakening, gradual deviation of health. Finish its course in moderate time. Primary action is primarily the action of medicine. By antipathic treatment, aggravation occurs after few hours of initial relief. Which one of the following is the invariable consequences of allopathic treatment? Artificial chronic disease. Which one of the following is invariable consequences of allopathic treatment? Artificial chronic disease, sacrifice patient strength, ruin patient's constitution, aggravation. 247. D. Aggravation. Which of the following is the invariable consequences of allopathic treatment? That is aggravation. Cure by nature is difficult, uncertain and dangerous. Cure by nature is difficult, uncertain and dangerous. 248. Cure by nature is difficult, uncertain and dangerous. The word double complex disease is found in aphorism 44. Double complex disease, DOUB, double complex disease. Double complex disease, aphorism 44. Double complex disease, aphorism 44. Acute miasm causes epidemic disease. Acute disease, individual, sporadic. Acute miasm causes epidemic disease. Acute miasm causes epidemic disease. In healthy women, plethora is only seen during. In healthy women, plethora is seen in healthy. During menses. In healthy women, plethora is only seen during several days before menses, during menses, several days after menses, during pregnancy. Okay. So the right answer here is several days before menses. Plethora, PLETHOR, plethora is seen several days before menses. 3 पे. In all epidemic, all persons suffer from same disease, same source of disease. Epidemic disease वही है. Which of the following should not be done by physician during case taking? Writing very expression used by the patients, asking suggestive questions, keeping silent, interrupt when patient and wonder. Okay, asking suggestive questions. Which one of the following is not an obvious cause? Poisoning, infection with venereal disease, attempt to suicide, dwelling in marshy district.
Obvious cause doesn't belong to dwelling in marshy district. Okay. Primary symptoms of psychosis is cauliflower-like growth. 255. 255. देखो कैसा कैसा सिम्टम्स दिया है, कैंकर, बूबो, cauliflower like growth and warts. Most of the people confused with the warts, but right option is cauliflower like growth. Primary symptoms of psychosis, cauliflower like growth. Who first prescribed the who first prescribed that every epidemic disease differs from others? Who first perceived that every epidemic disease differs from others? 256. Sydenham, Winslow, Chadwick, Paracelsus. Sydenham. Okay. Acute miasmatic disease which occurs only once in a lifetime. Measles, whooping cough, mumps. Acute miasmatic disease which occurs only once in a lifetime. Measles, mumps, whooping cough. Acute miasmatic disease which occurs only once in a lifetime. Measles, whooping cough, mumps. Acute miasmatic disease which recur frequently. Yellow fever, Asiatic cholera, plague. Measles, mumps, whooping cough. Acute miasmatic disease which recurs frequently is yellow fever, Asiatic cholera, plague. Prophylactic of purpura miliaris used by Hahnemann was aconite, belladonna, apis mellifica, rustox. 259. Aconite. Prophylactic of purpura miliaris used by Hahnemann was aconite. Artificial chronic disease, its prognosis and treatment is found in artificial chronic disease. Its prognosis and treatment is found in aphorism 74, 75, 76. Artificial chronic disease 74, 75, 76. Chronic disease produced by exposing the person continuously to avoidable noxious influences is uh, chronic disease produced by exposing the person continuously to avoidable noxious influences. Inappropriately named chronic disease, artificial chronic disease, true chronic disease, all inappropriately named chronic disease. Happy go lucky operation is being done by nature. Happy go lucky operation happy go lucky operation is being done by nature. In which aphorism of 5th edition Hahnemann said that homeopathy is only way to cure as only one straight line can be drawn between 2 points. 54th. Between two lines. In which aphorism of the 5th edition Hahnemann said that homeopathy is only way to cure as one straight line can be drawn between 2 points. In which method medicine is given to gain patients' confidence by delaying momentary relief. Allopathy, antipathy, homeopathy, isopathy. In which method medicine is given to gain patients' confidence by delaying momentary relief. Obvious cause can be obtained from the patients by routine case taking. Obvious physical examination. Obvious cause. Asking question privately. Obvious cause can be obtained by physician only.
Physical examination. During case taking, most important should be given on physician own observation, patient's description, attendant description, laboratory finding. Patient's description. What is the fate of chronic disease treated with common mild allopathic drugs? What is the fate of chronic disease treated with common mild allopathic drugs? Aggravation, momentary amelioration, unalteration, mixed disease formation. 267. What is the fate of chronic disease treated with common mild allopathic drugs? Unalteration. Unalteration. Who observed that mumps, uh, angina parotida disappears on cowpox inoculation? Who observed that mumps, angina parotida disappears on cowpox inoculation? Hahnemann, Jenner, Schindenham, Larry. Hahnemann. Which is not true regarding meeting of two dissimilar disease? Which is not true regarding meeting of two dissimilar disease? Stronger uh, suppresses a weaker, weaker is repelled by stronger, may form complex disease, occasionally cures the disease. Meeting two dissimilar disease which never occasionally cures the disease. Frequent and violent doses of purgative suppresses itch, fever, epilepsy. Frequent and violent uh, doses of purgative suppresses itch 270 C. प्रणाम रवि प्रकाश, कैसे हो रवि? क्या चल रहा है? Frequent and violent doses of purgative ITCH cure kit suppress itch. Hahnemann spent years in investigation source of chronic disease. 12 years. Hahnemann spent 12 years in investigating source of chronic disease. Hahnemann spent 12 years spending. Hahnemann spent. Hahnemann spent 12 years. First edition of chronic disease was published by Arnold, Hoofland, Dosselford, Staff. First edition of chronic disease was published by Arnold. Which of the following was transformed? Which of the following can transform primary SORA into secondary symptom of SORA? Climate, food and regimen, manners, habit, customs, all. Which of the following can transform? Which of, which of the following can transform primary SORA into secondary symptom of SORA? Climate, food and regimen, manners, habit and custom, all. In the individualizing patients, in the individualizing examination of patient disease, physicians should have attention in observing sound senses unprejudiced, all. Hahnemann spent 12 years in investigating chronic disease. First edition of chronic disease was published by Arnold. Which of the following can transform primary SORA into secondary? All of the above. In the individualizing examination of disease, physicians should have attention in observing sound senses unprejudiced, and all. When patient details his ailment, the physician should do all except write accurately with patient he told not to interrupt, keep silent, ask the patient to speak quickly so that he may ask further question. No. Which of the following is most difficult to cure? Mixed miasmatic disease, primary symptom of the miasm, one-sided disease, artificial chronic disease. Mercury can cure venereal disease by which method? Mercury can cure venereal disease by which method? Homeopathy method. Mercury can cure, okay.
Accessory mechanism of cowpox is given in which aphorism? 46. Accessory mechanism of cowpox is given in which aphorism is 46. Dose cannot be diminished according to circumstances. In homeopathic cure, both nature's cure, none. True radical healing art is found in exact opposite. True radical healing art is found in exact opposite. I cannot see. I think somewhere it is fallen.
Hyder Ali, how you got drug license? I'm a homeopathic doctor, so I will get obviously. Hyder Ali. हैदर, व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हैं? कहाँ से हैं आप? हैदर अली। मेरा नाम डॉक्टर सलमान है, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। येस, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर AIPGT। आई एम कॉमर्स स्टूडेंट फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, आई एम फ्रॉम मुंबई। What is the difference between homeopathy and other stream? Homeopathy is a very, I mean, Difference of a medicine. difference of a medicine, mostly difference in medicine only.
in homeopathy there are homeopathic medicine, allopathy obviously you know that those are allopathic medicine, chemical based medicine. Okay, here around 7 sources are there for which medicines are prepared, right? Yes, I think homeopathy, there is minimum aggravation, minimum side effect. We can understand Yes. and speak Urdu also, no issue. हाँ, आप हिंदी में भी बोल सकते हो, उर्दू भी बोल सकते हो, डोंट वरी. जैसे यूनानी की दवा अलग, आयुर्वेदिक के अलग, वैसे होम्योपैथिक के अलग. पाकिस्तान से कोई तो है, डॉक्टर बर्जीस, बहुत तेज़ बोलता है. सर आपको कितने मार्क्स मिले थे नीट में? नीलेश मेरे को 394 मार्क्स मिले थे. 392 मतलब 390 के अराउंड. Is it made by herbs? Yes, yes. Lots of sources are there for homeopathic medicine. गाइज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को. नीलेश आपको क्या मिला अभी अभी आप क्या करने जा रहे हो? सर आपको 390 पर बीएमएस मिल जाता ना? हाँ मिल जाता, लेकिन मैंने नहीं किया बीएमएस, राइट नीलेश? मैंने नहीं किया, मुझे बीएचएमएस ही करना था. सर मैं प्राइवेट बीएमएस करूँगा. गुड, कर लो, अच्छा रहेगा. टाइम वेस्ट मत करना, कोई भी ड्रॉप मत लेना नीलेश. इस बार जो भी मिले कर लेना. प्राइवेट बीएमएस अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है. महाराष्ट्र से ही करोगे ना? सो देयर इज़ नो साइड इफेक्ट ऑफ होम्योपैथी, स्टिल वाई पीपल प्रेफर अदर ट्रीटमेंट्स? बिकॉज marketing is not good. For homeopathy, marketing is not that much good, and government also don't support too much, because money is in more money is in allopathic kind of things, right? As you know, there are lot of surgeries, lot of medical shops, medical pharma companies are there. So because of those things only, the promotions, people know, because everyone knows that allopathic kind of medicines are there, but there are lots of people, they don't know what is homeopathy. They have never taken single pills of homeopathic medicine, right? So there, that is a problem. The problem is in a advertising and understanding. They don't, lot of people, they don't know what is homeopathy. Homeopathy, what can cure? Okay, homeopathy cures the disease. Homeopathy cure the patient. Less awareness, yes, yes. Awareness is very less. Where I stay, if I ask to the 100 people, in that 100 people, 99% will say that I have never taken a homeopathic medicine. Okay, because they don't know, because homeopathic medicine are not easily available. Allopathic medicines are easily available in every nook and corner, right? So this is the biggest difference. In 1 kilometer area, around more than 100 pharmacy will be there. Can a homeopathy doctor perform a surgery? No, no, no. We don't want to perform. That is a thing. We don't want to perform surgery. And in our literature, in our whole course for 5.5 years, so it is not mentioned like we have to, suggest. We have to stop the um, surgery. Like, okay, if surgery is required, then only we will allow. Otherwise, we will try to give the medicine, and with the medicine we'll try to solve the problems. So surgery is not an option for many diseases, like boils,
fibroid, and it depends on the size and all things. Like there are many renal stone patient there are there. So if we give the homeopathic medicine, the cure will be there, but depend on the size and all things, it matters. So surgery is not, yes, we read in our homeopathic course. Surgery subject is there, we read the surgery, but we need to understand which is surgical and which is not surgical. Okay, so based on that we understand, we refer the patient and we try to treat the patient. You mean homeopathy medicine play role in inflammation? Yes, there are lots of medicine which play very good role in inflammation and all things. In homeopathy, except for emergency situation, other than that for all treatments are there. कोई मरीज नहीं आ रहा है आज, मैं घर पे हूँ, आई एम एट होम. ओके, मेरे घर पे भी फुल फार्मेसी है, मेरी क्लिनिक पे भी फुल फार्मेसी है. प्रेजेंटली अभी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ एक एग्ज़ाम का. ओके, AIPGT एग्ज़ाम है, तो उसका मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जो कि 22 अगस्त को है. ओके, सो उसका टेंशन मत लो, आई एम अर्निंग क्वाइट गुड मनी. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट. What about non-curable cases like cancer? Then in those cases, Heather, in those cases we'll palliate the disease. Palliation is the best option for everything. Suman, which is Suman's Sanpui, which state, sir? I'm Maharashtra, Mumbai. Suman, Maharashtra, Mumbai. Heather, for non-curable cases, palliation is the best option. Yes, we have a treatment for palliation also. Palliation, you understand, like the disease will not cure, but yeah, suffering can be reduced to please the patient. To, you know, palliation is a simple word, to please the patient. Can, I mean, for in non-curable disease, in those cases we have to palliate the patient. Palliate in the sense the suffering should be reduced. Okay, suffering. If the patient is in too much pain, yes, painkiller like homeopathic painkiller should be given. I'm West Bengal, sir, in first MBBS first year. Nice, West Bengal, good. Suman, West Bengal, in West Bengal mostly homeopathy works more, na? NIH is there, right? Suman. My mom has stage 4 breast cancer. Stage 4, then you need to consult. Like, I mean, obviously, you need to show the a good doctor in your country, in your state, Heather. गाइस, वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. Palliation is the only option in this case. She takes a chemo. Yes, I understand. If before it was in deducted, then mastectomy is the only option. Mastectomy. This side. उस तरह गिरोगी इस side.
बंद कर दो इस साइड, उस साइड गिरेगा वो चार्जर, इस साइड। हाँ तो इस साइड लेटो ना, हटा लो उसको। Okay guys, if you have any query, you can ask. I'm going to study again. Yeah. In chemo, she suffers many issues like digestion, hair loss, weakness. In chemo, she suffers from many issues like, that is a chemo treatment is like that only. Hair loss will be there, weakness will be there, because it is a very strong treatment, right, Haider? So these things will be there. Chemo, radiation, and all things, it will be there. It is a common complication of chemo treatment. गाइज मैं डेली लाइव आता हूँ 9 to 11 इवनिंग में, उस टाइम पे मैं कंसल्टेशन करता हूँ, फ्री कंसल्टेशन एंड एडवाइस एंड ऑल थिंग्स। बस अभी भी आप पूछ सकते हैं। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और यस, मेरा नाम डॉक्टर सलमान है, मैं मुंबई से हूँ। यस, होम्योपैथी कैन इन्फ्लेम, यस, नो इशू। एनीवे शी इज़ इन 4 स्टेज, तो होम्योपैथी कैन हेल्प प्रॉपरली। हैदर, you need to consult proper doctor, they can, yes. Dreamer physio, sure. Dreamer physio, sir, I am male, 21-year age, recently diagnosed with type 2 diabetes, currently on metformin, etc. allopathy medicines. So sir, can homeopathy reverse my diabetes, and if yes, how can I consult with you with the same? And Dreamer physio, your this need to be known, like HbA1c. I want to know your HbA1c, your history, like your parents are your parents suffering from same disease like diabetes? Okay, need to know your current report, like present report of HbA1c, postprandial and fasting sugar. Okay, ड्रीमर फिजियो, उसके साथ साथ आपको प्रॉपर हिस्ट्री देनी रहेगी। रिवर्स होना मुश्किल है, बट हाँ कंट्रोल में रहेगा, विदाउट एनी साइड इफेक्ट कंट्रोल में रहेगा। रिवर्स होना मुश्किल है, बट डिपेंड्स ऑन द टाइम ड्यूरेशन कि कितने सालों से आपको हो रहा है वो, राइट। ड्रीमर फिजियो, for consultation you need to check okay, Dreamer physio, I'll give you my Insta ID, okay, just a second। वैसे भी आप कल आए थे शाम को ना, तो जस्ट अ सेकेंड, डॉक्टर SALMAN 27,
तो ये मेरी इंस्टा आईडी है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, यस, ये मेरी इंस्टा आईडी है। मुझे याद है ड्रीमर फिजियो कल आप आए थे, इतना तो याद रहेगा यार। डोंट वरी। सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया HbA1c और आपके जो भी रिपोर्ट्स हैं वो बताइए, और जो भी मैं पूछूंगा उसके रिगार्डिंग, ठीक है। आपको मेटफॉर्मिन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, बट डिपेंड्स ऑन योर शुगर लेवल। ओके, उदय वीर, हेलो हेलो उदय, कैसे हो? मोस्ट वेलकम हैदर, मोस्ट वेलकम। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर इफ़ यू फाइंड दिस वैल्यूएबल, प्लीज़ शेयर द लिंक टू योर फ्रेंड्स। ओके हैदर, प्लीज़ शेयर द चैनल एंड लाइक द वीडियो, एंड यस, सब्सक्राइब माई चैनल। हाँ उदय, कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? मोस्ट वेलकम ड्रीमर फिजियो, मोस्ट वेलकम। उदय कहाँ हो भाई? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हैदर, थैंक यू। गाइस, मेरा नाम डॉक्टर सलमान है, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, एंड आई एम फ्रॉम मुंबई। इफ़ यू हैव एनी कंसर्न रिगार्डिंग हेल्थ, एजुकेशन, नीट, एनीथिंग यू वांट टू नो, जस्ट कमेंट डाउन। ओके, कमेंट करिए, आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल। कोई भी जानकारी चाहिए किसी के बारे में भी आप पूछ सकते हैं। BAMS, BHMS, MBBS, BDS, नीट, कोई भी बीमारी के बारे में अगर आपको कंसल्टेशन करना है, यस, आप कंसल्ट कर सकते हो। या आई नो यू विल बी थिंकिंग कि आप लोग सोच रहे होगे कि सर मतलब यहाँ पे क्यों है, आई मीन अपने क्लिनिक पे क्यों नहीं है। मैं अपने घर पे हूँ, मेरी मेरी एक एग्ज़ाम है 22 अगस्त को। क्लिनिक से इसीलिए छुट्टी है, क्लिनिक से छुट्टी है। 22 अगस्त को मेरा एग्ज़ाम है, एक जिसको हम पीजी इन होम्योपैथी बोलते हैं, AIAPGET, ठीक है। तो उसके लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ओके, सो आप ये मत सोचिए कि डॉक्टर होके घर पे बैठा है। ओके,
सर मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट बन गया फ्री ऑफ कॉस्ट. शौविक गुड. थैंक यू. बस कैरेक्टर सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बनाना है. और क्या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा शौविक. स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा, वो ले लेना, ज़रूरी है वो. स्कूल लिविंग बहुत इम्पोर्टेंट है. एक बार कैरेक्टर नहीं बनेगा फिर भी चलेगा. स्कूल लिविंग और कैप ज़रूरी है. ठीक है. बाकी चीज़ें शाम को बताता हूँ. ठीक है. कुछ और रहेगा डाउट तो शाम को बताता हूँ 9 to 11 के बीच में.
Sanity is very different perspective of truth. आपकी फ्रेंड यस यस जिट्स यस जिट्स यू आर राइट. हेलो शैडो, कैसे हो? कैसे हो शैडो? गुड. मेरा मतलब ये नंबर का नहीं है, जस्ट फॉर ब्लू रेज. क्या कर रहे हो शैडो आजकल? एडमिशन हुआ आपका शैडो? पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए? ड्यूरेबल काफ़ी अच्छा है भाई. एक साल होने वाला है. काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है. फिर से एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ. गुड शैडो, अच्छी बात है. और बताओ, तबीयत कैसी है? मेंटल स्ट्रेस कम हुआ कि नहीं? हाँ, बीएचएमएस में है, गवर्नमेंट नागपुर में हो जाएगा. गुड, अच्छी बात है. गवर्नमेंट में हो जाएगा तो और अच्छी बात है. सही है शैडो, अच्छा है. तबीयत ठीक है ना? कोई टेंशन तो नहीं अभी?
ठीक है शैडो, कुछ भी रहेगा पूछ लेना, ठीक है। लाइव में अभी पढ़ाई चल रही है, मेरा एग्ज़ाम है 22 अगस्त को, ठीक है। कभी भी लाइव रहता हूँ, पूछ लेना कुछ भी डाउट रहेगा तो। BHMS अच्छा है, BHMS के बारे में मैं बताऊँगा आपको अच्छे से, ठीक है। कैसे? रबर बैंड कैसे भाई? आँख तो बची है ना। नोट्स पे लगा था तो टूट के आँख पे लग गया, वाह। कोई नहीं, आँख सेफ है ना। सब कंजूमेटिव हेमरेज हो गया। ठीक है ठीक है। मेडिसिन लिए थे? सब कंजंक्टाइवल होगा। कंजंक्टिवा। थोड़ा ब्लड आता है आँख में, ओके। ब्लड आता है ना, कोई मेडिसिन ले लो ना। आर्नी का एक मेडिसिन है, विटामिन सी की कैप्सूल आती है, वो लो, चले जाएगा। विटामिन सी की कैप्सूल आती है, वो ले लो, सही हो जाएगा। मेरा भी जब मैंने ऑपरेशन कराया था तो मुझे भी ब्लीडिंग हुई थी, तो मैंने विटामिन सी की कैप्सूल लिया था, तो ठीक हो गया था। टाइम लगेगा थोड़ा, 1 हफ्ते 15 दिन लगेंगे, बट ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। होम्योपैथी में कोई आई ड्रॉप है जो रेगुलर यूज़ कर सकते हैं आई स्ट्रेन के लिए? नहीं नहीं, आई स्ट्रेन के लिए मोस्टली हम कॉक्यूलस एक मेडिसिन है, वो यूज़ कर सकते हैं। बट होम्योपैथी में ऐसा आई ड्रॉप है, बट मोस्टली नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है। आई ड्रॉप बहुत ही सेफली यूज़ करना चाहिए कभी भी। आईज़ आर वेरी, यू नो, क्या बोलूँ, आपको भी खुद पता है कितना नाजुक चीज़ है। आँख से, आँख रहेगी तो सब कुछ रहेगा, राइट जिट्स? मेरे घर पे तो आजकल लगा देते हैं। कोई नहीं शैडो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक बार एडमिशन हो जाएगा तो यू विल बी हैप्पी, डोंट वरी। सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव है भाई, संभाल के रखो आइस को, जान से ज़्यादा आइस को संभाल के रखो। जिट्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मैं डेली लाइव आता हूँ 9 to 11, ओके। अभी मेरा एग्ज़ाम है, जैसा कि मैंने बताया, मेरा एग्ज़ाम है 22 अगस्त को, ओके। तो उसके लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, ओके। अरमान भाई नहीं आते हैं क्या? अरमान भाई शाम को ही आते हैं अरमान, शाम को ही आता है, 9 to 11 में ही आता है। एपोकैलिप्स का एग्ज़ाम है, एपोकैलिप्स PG की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना शैडो, MBBS PG की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनका वो भी आएंगे, वो भी आएंगे। अब अगस्त एंडिंग से सभी आएंगे। बाकी अरमान आता है डेली, 9 to 11 डेली आता है। सर्जन, देखते हैं। अभी तो सब डिजिटली पढ़ना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा आई स्ट्रेन हो जाता है, इसीलिए पूछा। नहीं जिट्स, आई स्ट्रेन होना कॉमन है, बट हमें आँख को आराम भी देना चाहिए, राइट। जैसा कि मैंने अभी आई लेंस मतलब ये लगाया है, तो मैं गैप लेता हूँ हमेशा, फ़ोन ही यूज़ नहीं करता, हमेशा लैपटॉप में यूज़ नहीं करता हूँ, गैप लेता हूँ मैं, ओके। तो आप भी गैप लीजिए, टैप रनिंग वाटर से वॉश करिए, ओके। और हेल्दी खाना खाइए, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा आई स्ट्रेन होती है तो कॉक्यूलस, मैंने मेडिसिन बताया ना, कॉक्यूलस आप यूज़ कर सकते हो, 30 पोटेंसी में आप यूज़ कर सकते हो।
ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भैया वो का क्या है रिलीज वाली, मुझे मैसेज करो, शैडो मैसेज करो। नंबर नहीं, नंबर ही नहीं, मोबाइल टूट गया, वो मोबाइल में नंबर था। ठीक है शैडो, मैं शाम को देता हूँ आपको, शाम को आ जाओ, मैं देता हूँ, ठीक है, आपको नंबर भेज देता हूँ। ओके, डोंट वरी, शाम को मैं नंबर देता हूँ, डोंट वरी।
नहीं सुना है, बोलो। हाँ ऋषभ। मैंने पहली बार ऐसा कुछ वर्ड सुना है। सर आपने पेट्रा दूरा के बारे में कुछ सुना है? नहीं, मैंने नहीं सुना है। क्या है वो? अभी आ रही है आवाज़ ऋषभ? अभी आवाज़ आ रही है अभी? एम ऑडिबल ऋषभ? वोकेबलरी ऑफ द डे क्या है आज, बताओ। पूछो फिर। सब पेट्राडूना एक यूनिक टाइप का स्टोन था जो कि ताजमहल में यूज़ हुआ है शाहजहाँ के टाइम। ओ, तो खासियत क्या है उसकी? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस? तो वो सर उसका डिज़ाइन के काफ़ी यूनिक है। आप गूगल करना पेट्राडूरा इन ताजमहल आएगा। ओके, रुको अभी गूगल करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। पेट्राडूरा, ATR पेट्राडूरा ताजमहल। Elaborate in a technique where artisan carve precise channel into white marble and embedded hand-shaped semi-precious stone to create permanent colorful floral and geographic design. Hard stone, ओके ओके, समझ गया समझ गया। तो वोकेबलरी ऑफ द डे क्या है ऋषभ?
वोकेबलरी ऑफ द डे सर, एडोरिट मीन्स बताओ, एडोरिट एडोरिट आई थिंक आपने स्पेलिंग गलत लिखी है, एड्रोइट होगा। यस यस यस, एड्रोइट। अ क्लेवर पर्सन हु डील विद द पीपल प्रॉपरली। मैंने गूगल किया है। सॉरी, मुझे पता नहीं था, बट हाँ, क्लेवर पीपल, यस। मैंने गूगल किया है, बट हाँ, पहली बार सुना है एड्रोइट, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। कोई नहीं, शाम को चीटिंग नहीं करूँगा, डोंट वरी। शाम को डिफ़िकल्ट लेके आइएगा, इवनिंग में। डन सर, चलो आप पढ़ो, मैं भी चलो खाना। ओके ओके, बाय। टेक केयर ऋषभ, टेक केयर।
जाओ, जैसे खाना खा लेते तो फिर चालू करो, नहीं खा लेते। मैं नहीं जाऊँगा, तुम जाओ। मैं नहीं जाऊँगा। नहीं खाओगे? जाके खा के आओ, जाके मैं खा के आता हूँ फिर। ये बन रहा होगा शायद। तुम बोल रहे हो। अभी लंच, तुम बोल रहे हो। अभी लंच
చేయాలో. मुझे नहीं आने.
True physician must be provided with genuine medicine. 264 aphorism. तुम आगे थोड़ा सा हाथ बढ़ाओ, हम्म थोड़ा सा बढ़ाओ ना आगे, बोलो ना। वहाँ नहीं, थोड़ा हाँ इस डायरेक्शन, हाँ इधर मेरे साइड हाथ लेकर आओ, हाँ थोड़ा सा और, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ हाथ, थोड़ा सा और, हाँ वहाँ और आगे करो, हाँ करो ना आगे, हाँ। हाँ वहाँ पे कुछ है, क्या है? ऐसे ऐसे नीचे हाथ करो, हाँ हाँ ऐसे थोड़ा सा पास लाओ, हाँ थोड़ा सा पास लाओ, हाँ ऐसे पास। हाँ। सलमान वहाँ पे कुछ लगा हुआ है, वो मुझे दे दो बोल रही हूँ, इतना डायरेक्शन समझाना पड़ रहा है तुमको। I'm bad in direction. True physician must be provided with genuine medicine. Aphorism 264. The patient should take right medicine correctly chosen and prepared by the physician. 265. True physician must be provided with genuine medicine. इसको लिखना पड़ेगा. True physician must be provided with genuine medicine. 264. Aphorism 2. The patient should take right medicine correctly chosen and prepared by the physician. 265. Aphorism. Animal and vegetable substances possess their medicinal quality in their raw state and the process which destroys their medicinal power. 266. And its footnote. Preparation of medicine from fresh plant. 267. 264 से स्टार्ट हो रहा है. 264. Preparation of medicine from fresh plants. 267. Preparation of medicine from fresh plant. 267 and its footnote. Preparation of medicine from dry plants. 268. Preparation of medicine from fresh plants. 267. Preparation of medicine from dry plants. 268. Preservation of dry medicinal substance. Water bath. 268 footnote. Preservation of dry medicinal substance. Water bath. 268 footnote. Definition of dynamization. 269. Aphorism 269. Definition of dynamization. Aphorism number 269. स्नेहा सर जिंदगी भर लाइव ही करते रहते हो क्या? यस यस स्नेहा, जिंदगी भर. यस यस. Law of friction. Definition of dynamization. Aphorism 269. Law of friction. 269 first footnote of 6th edition. Law of friction. Aphorism 269 first footnote of 6th edition. Snap, currently I am having exam on 22nd August. So because of that I am studying. Potentization up to 38 potency. Subcation in centesimal scale. Aphorism 270. Potentization up to 38th potency. Potentization up to 38th potency. Subcation in centesimal scale. Aphorism 270. Repetition of 50 millisimal potency. Aphorism 248 6th edition. Repetition of 50 millisimal potency. Aphorism 248 6th edition. Administration of 50 millisimal potency. Aphorism 248 footnote 6th edition. Preparation of 50 millisimal potency. Aphorism 276th edition. Administration of 50 millisimal potency. Aphorism 248. Repetition of 50 millisimal potency. Aphorism 248 6th edition. Repetition of 50 millisimal potency. Repetition of 50 millisimal potency. Aphorism 248. Repetition of administration of 50 millisimal potency. Aphorism 248. Preparation of administration and repetition of administration and repetition. Aphorism 248. Preparation of 50 millisimal potency. 270. Aphorism 276th edition. Preparation of 50 millisimal potency. 276th edition. Preparation of 50 millisimal potency. 276th edition. Method of trituration, washing of mortar pestle. 270. Vial must be two-third filled for succussion. 270 second footnote 6th edition. Homeopathic Pharmacy Act. Good manufacturing practice.
वेबरनेसिए, एग्नस कैक्टस वेबरनेसिए, वलेरियानेसिए, वलेरियाना, अर्टिकेरियसे, कैनाबिस इंडिका, कैनाबिस सटाइवा, अर्टिका यूरेंस, अर्टिकेशिए, कैनाबिस इंडिका, कैनाबिस सटाइवा, अर्टिका यूरेंस, अम्बिलिफेरे, एथ्यूसा, सिक्यूटा, कोनाइयम, पेट्रोसाइलिनम, हाइड्रोकोटाइल, सैम्ब्यूल, एसाफोटिडा, फेलेंड्रियम, अमोनियम गम्मी, ओएनेथ, क्रोकेटा, थाइमिलेसिए मेजेरियम, थाइमिलेसिए मेजेरियम, स्टर्क्यूलेसिए अब्रोमा अगस्टा, अब्रोमा रेडिक्स, स्टर्क्यूलेसिए अब्रोमा अगस्टा, अब्रोमा रेडिक्स, स्टर्क्यूलेशिए अब्रोमा अगस्टा, अब्रोमा रेडिक्स, सोलनेशिए बेलाडोना कैप्सिकम, सोलनेशिए बेलाडोना कैप्सिकम, डल कैमरा, हायोसियमस नाइगर, स्ट्रमोनियम टबैकम, विथियाना, सोलेनम नाइग्रम, स्माइलेशिए सरसापेरिल्ला, ट्रिलियम पेंडुलम, स्माइलेशिए सरसापेरिल्ला, सोलनेशिए, सोलनेशिए के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, बेलाडोना कैप्सिकम, बेलाडोना कैप्सिकम, डल कैमरा, हायोसियमस, सोलनेशिए, बेलाडोना कैप्सिकम, डल कैमरा, हायोसियमस, स्ट्रोमोनियम टबैकम, सोलेनम नाइग्रम, सेपेंडेसिए एस्कुलस, हिप्पो एस्कुलस, सेपेंडेसिए एस्कुलस, रूटेशिए, रूटा ग्रेवियोलस, एगिल फोलिया, रूबिएशिए, रूबिएशिए, रूबिएशिए सिंकोना, सिंकोना कॉफ़ी, सिंकोना कॉफ़ी, इपिकैक गैलियम, रेनकुलेशिए, रेनकुलेशियस, एकोनाइट नेपिलस, रेनकुलेशिए, एकोनाइट नेपिलस, एक्टिया रेसिमोसा, हेलीबोरस नाइगर, रेनकुलेशिया, एकोनाइट नेपिलस, एक्टिया रेसिमोसा, हेलीबोरस नाइगर, हाइड्रास्टिस, पल्सेटिला, रेनकुलस बल्बोसा, स्टेफिसाइग्रिया, एक्टिया स्पाइकिटा, क्लिमेटिस एरेक्टा, पायोनिया, रेनकुलस इलेक्ट। खाना खा लो, बाद में करना, ठंडा हो जाएगा वो। एक्टिनाइट नेपिलस, एक्टिया रेसिमोसा, हेलीबोरस नाइगर, हाइड्रास्टिस, पल्सेटिला, रेनकुलस बल्बोसा, स्टेफिसाइग्रिया, एक्टिया स्पाइकिटा, रेनकुलेशिया, सोलेनेशिया, काफ़ी है। लाइकोपोडियम, लाइकोपोडिएशिए, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडिएशिए, लोबेलिएशिए, लोबेलिया इन्फ्लेटा, लोबेलिएशिए, लोबेलिया इन्फ्लेटा, डायस्पोरिएशिए, ड्रोसेरेशिए, इक्विसिटेशिए, एनाकार्डियम ओरिएंटल, रस्टॉक्स, एनाकार्डिएशिए, एनाकार्डियम ओरिएंटल, रस्टॉक्स, एनाकार्डियम। आप क्या पढ़ रहे हो? फॉलो से? नहीं, फैमिली मेडिसिन, फैमिली भी पूछते हैं ना लोग, उतना नहीं आएगा वो, एक भी क्वेश्चन रहेगा, तो और ये याद रखनी है, पूरा दिमाग भर जाएगा। नहीं, बस ऐसे ही। आप एक काम करो ना, कल भी आपने यही पढ़ा था, आज भी पढ़ रहे हो, अब थोड़ा सा अलाइड पढ़ लो। गायनिक पढ़ो, गायनिक के क्वेश्चन कंपलसरी आते हैं हर बार, एक क्वेश्चन डिलीवरी से रहेगा, उसके स्टेजेस ऑब्वियसली इजी है, बट आदमी भूल गया होगा कब पढ़ना है ना, वो सब कुछ अब एक बार देख लो। एनएट से एक क्वेश्चन आता है, पर एनएट बहुत बड़ा है, गायनिक छोटा रहता है। फिजियोलॉजी एनाटॉमी नहीं पढ़ना, एनएट छोटा है, वो गायनिक छोटा है, आप उसको इजीली कवर कर सकते हैं। चलो लेट्स स्टडी गायनिक। आराम से। लेट्स स्टडी गायनिक ब्रो। कार्डियोवैस्कुलर, गैस्ट्रो, लीवर, रेस्पिरेटरी, हेमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, किडनी, रोमेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, न्यूरोलॉजी, भाई ये तो पूरा मेडिसिन है। गायनिक पढ़ लो और वो पढ़ो, एफएमटी भी देख लो और पीएसएम भी देख लो। इसमें क्या है? ओके, पीएसएम इसमें है। तो डेमोग्राफी,
वो देख लो, PSM 6 क्वेश्चंस देख लो। PSM MCQs पॉइजन्स वगैरह का कुछ तो आएगा। ओ पांडे कैसे हो भाई, कहाँ हो? आपकी यात्रा कैसी रही? पढ़ो पढ़ो अरे नहीं, कहाँ हो भाई? यात्रा कैसी रही आपकी, वो तो बता दो। पहुंच गए सही से घर पे कि नहीं? घर पे? घर पे मतलब वहाँ? FMT में सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना। ओके बॉस, अभी इधर ही हूँ। 15 को रिटर्न हैं? 15 को? आज कितना है भाई? 12 है आज। तो अभी इतना आदमी दूर गया है तो घूमेगा फिरेगा नहीं क्या? सही है यार, एंजॉय एंजॉय। गुड 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 गुड। लाइफ हो तो ऐसी। होती नहीं, वो बनाने पड़ती है। देखा था मैंने कितना बनाया थी। तो उसका बैकग्राउंड तो देखो भाई। मैं देखूंगी तुम कितना आगे बना के ले रहे हो। बॉय का अभी तक पढ़ रहे हो सर? यस यस, अभी पढ़ रहा हूँ। 15 एक मंदिर पे दर्शन करना है। 15 ओके ओके। एंजॉय एंजॉय, बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय एंजॉय करो। मुँह होती नहीं है सर, माननी पड़ती है। ओके ओके। करेक्ट मैम। अरे रे, सही है सही है। चलो PSM MCQs पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मेडिसिन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूमैन एंड गुरशो। रूल ऑफ सैनिटेशन इन UK इज प्रपोज्ड बाय चैडविक। गुज्जू गुज्जू सेम माइंडसेट, गुज्जू गुज्जू सेम माइंडसेट। सही है सही है। रूल ऑफ सैनिटेशन इन UK इज प्रपोज्ड बाय जॉन स्नो, विंस्लो, चैडविक, जॉन हावर्ड। चैडविक। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। थैंक यू पांडे। Human Development Index HDI, life expectancy, gross national product as per capital income. Human Development Index, life expectancy, gross national product as per capital income, education, social status and life expectancy, per capital income, education and life expectancy. Human development per capital income, education and life expectancy. Best method for collecting vital statics: active surveillance, passive surveillance, sentinel surveillance. Sentinel surveillance. Best method for collecting vital statics: sentinel surveillance. इसको तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। चलो ठीक है। Best method for collecting surveillance vital statics: active surveillance, passive surveillance, sentinel surveillance, contact tracing. Sentinel surveillance. Primordial prevention is the prevention of disease among the hill dwelling and tribal people. Prolongation of human life, no. Promotion of health well-being. Prevention of disease through modification of risk factor. Yes, it is right. Fifth, D. In a country, socio-economic progress is the best indicated by uh, gross net production per capita GNP, IMR, infant mortality rate. In a country, socio-economic progress is best indicated by IMR. Vitamin A prophylaxis in 3 to 6 years children is an example of health promotion specific protection. Vitamin A prophylaxis in 3 to 5 years children is an example of
हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोडक्शन, अर्ली डायग्नोसिस एंड एक ट्रीटमेंट. मिनट, उसको क्या दे रहे हैं? विटामिन ए, तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होगा. स्पेसिफिक प्रोडक्शन, यस, सही है. कैसे? हेल्थ प्रमोशन ऑब्वियसली नहीं, विटामिन ए दिए हैं हम हेल्थ प्रमोशन स्पेसिफिकली. क्या है? हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, वो अवेयर वाला कर हेल्थ रहे हैं, प्रमोशन. यस यस, हम कुछ एक चीज़ दे रहे हैं स्पेसिफिक चीज़ के लिए. स्पेसिफिकली. नाइट ब्लाइंडनेस और वो सारी चीज़ों के लिए विटामिन ए दे रहे हैं, तो हम उसको स्पेसिफिक प्रमोशन जो The measure used to express the global burden of disease is the measure used to express the global burden of disease, disability adjusted life year, case fatality rate, life expectancy, age specific incidence rate. The measure used to express the global burden of disease, disability adjustment life year. Okay. Leprosy and tuberculosis are best prevented by chemoprophylaxis, influenza, immunoprophylaxis, early diagnosis and treatment. Obviously, leprosy and tuberculosis are best prevented by early diagnosis and treatment. All show iceberg phenomenon except influenza, hepatitis, polio, chickenpox. Iceberg phenomenon, chickenpox. Obviously, it is a communicable disease, no? Chicken. What is the actual intention for doing sentinel surveillance? Sentinel surveillance best method of collecting vital statics. To know the number of sentinel surveillance, to know the total number of cases for health planning, to know the natural history of disease, to prevent the disease. What is the actual intention of doing sentinel surveillance? To know the to know the total number of cases. To know the total number of the cases. Virulence of disease is indicated by proportional mortality rate, specific mortality rate, case fatality ratio, amount of GDP spent on the disease. Virulence of disease is indicated by case fatality ratio. इस पे लगा के पढ़ो क्या थोड़ी देर के लिए नीचे नहीं ऐसे सही है. सो जाओ. नहीं नींद कहाँ आएगी अब, एग्ज़ाम आ रहा है तो नींद नहीं आएगी. All are true of a proved death rate except it is a proportion include death in all age groups can be used to compare mortality between two countries. Number of death in a year it can be used to compare. Provision of free medical care to the people at the government expenses is known as social therapy, social medicine, social insurance program, state medicine. Provision of free medical care to the people at the government expense is known as state medicine. 15A, state medicine. First country to socialize medicine completely. First, first country to socialize medicine completely is Russia. 16. Russia. First country to socialize medicine completely is Russia. Man is secondary host for malaria, tuberculosis, filariasis, relapsing fever. Man is a secondary host for malaria. 17A. Living standard of people is best assessed by infant mortality rate, maternal mortality rate, physical quality of life index, death rate. Pap smear is an example of pap smear. Pap smear is an example of primary level of prevention, secondary level of prevention. Pap smear, secondary level of primary level, okay. Secondary level of prevention. Pap smear is an example of secondary level of prevention. The following parameter is not included while computing PQLI index. Life expectancy life expectancy at 1 year, infant mortality rate, life expectancy at birth, literacy rate. Prevention of emergence of high risk factor is primordial prevention of emergence of high risk factor. Primordial prevention, primary prevention, secondary prevention, and tertiary prevention. So the right option is primary prevention. Checking for sputum AFB comes under secondary prevention. The level of prevention practiced by wearing of spectacle is the level of prevention practiced by wearing of spectacle is
Checking of sputum AFB comes under secondary prevention. Keeping the frequency of illness within accept, acceptable limits is best described as disease control. Keeping the frequency keeping the frequency of illness within acceptable limits is best described as disease control. The best method of promoting healthy lifestyle in children, primordial prevention. The best method of primordial prevention. Kuppus, Kuppuswamy socioeconomic scale does not include housing, education, occupation, income, housing. Kuppuswamy socioeconomic scale does not include housing. Kuppuswamy, 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 education, occupation, income does not include house. The concept of multifactorial causation of disease was first mooted by father of immunization was Louis Pasteur. Edward Jenner, 28. Louis Pasteur. Louis Pasteur. Father of immunization. देखो चल रहा है देखो बंद हो गया। एक बार चालू करके देखो वाईफाई अरे उसमें ही देखो ना कुछ नहीं हम्म हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है। Sullivan index indicates life free of disability. Sullivan index. SULLIVAN Sullivan index life free of disability. Sullivan index indicates life free of disability. Rheumatic fever prophylaxis is an example of rheumatic fever primary prevention. Rheumatic fever prophylaxis is an example of primary prevention. Estimating the burden of particular disease in a community is measured by estimating the uh, estimating the burden of particular disease in a community is measured by proportional mortality rate, disease specific mortality, crude death rate, incidence of disease. Proportional mortality rate. Estimating the burden of particular disease in a community is measured by proportional mortality rate. Primary prevention does not include health promotion, specific protection, health education, early diagnosis and treatment. Iron and folic acid supplementation forms specific protection. Iron and folic acid supplementation forms specific protection. Iron and folic acid supplementation forms specific protection. Iceberg phenomenon differentiates apparent and inapparent, symptomatic and non-symptomatic, cases and carriers, diagnosed and undiagnosed. 34a. Iceberg phenomenon differentiate apparent and inapparent. In a village of 100 children, 60% are immunized against measles. One child traveled outside and returned with measles and infected other 26 children. What is the secondary attack rate? 67%. Serial interval is 36. Serial interval is interval between primary and secondary cases. Serial interval is interval between primary and secondary cases. Interval between first case and last case. Interval between primary case and all subsequent. Interval between primary and secondary cases. Interval between first case and last case. Interval between primary case and all subsequent case multiplied by secondary attack rate. Interval between incubation period and gestational period. Interval between primary and secondary cases. Which of the following is an example of disability limitation? Which of the following is an example of disability limitation? Reducing
Occurrence. Which of the following is an example of disability limitation? Reducing occurrence of polio by immunization, arranging for schooling of child suffering from PRPP, resting affected limbs in neutral poison. Surveillance by WHO is not done for. Surveillance for Surveillance by WHO is not done for polio, malaria, relapsing fever, viral encephalitis. All the following indicators are included in the physical quality of life index. Physical quantity of life index except life expectancy at the age of 1 year, literacy rate, per capita income. Life expectancy at the age of 1 year, literacy rate, per capita income, infant mortality rate. Physical quality. Physical quality of life index, PQLI. Toxoid is prepared from exotoxin. Toxoid is prepared from exotoxin. Toxoid is prepared from exotoxin. Toxin Toxoid is prepared from exotoxin. Vaccine which must be stored in the freezer compartment of a fridge are 41. Vaccine which must be stored in the freezer compartment of a fridge, OPV. In which of these conditions is post-exposure prophylaxis not useful? Measles, rabies, sensitivity, pertussis. In which of these conditions post-exposure prophylaxis not useful? Measles, rabies, pertussis, whooping cough. All are true of randomized control trial except groups are representative of the population. Bias may arise during evaluation. In both study and control groups should be comparable. In a single blind trial, the doctor does not know of group allocation. DPT vaccine is toxoid killed vaccine both. DPT vaccine, diphtheria, pertussis and tetanus vaccine is toxoid killed vaccine. Toxoid and killed vaccines. Ya Allah. All are morbidity indicator except period of stay in hospital, doctor population ratio, attendance of outpatient department, notification rate. Doctor population ratio, morbidity indicators except. Which is false about cohort study? Incidence can be measured, used to study chronic disease, expensive. Cohort study always prospective. Live attenuated vaccines are OPV, oral polio vaccine. Live attenuated vaccine are OPV. Live attenuated vaccines are OPV.